Hani diyor ya, son çağın çığır açan lideri Mevdudi. Gerçek başarı Allah katında isminizin münafık yerine mümin, asi yerine müslim ve vefasız yerine vefakar olarak yazılmasıdır. जैसे कि आखिरी ज़मान के मशहूर रहनुमा उस्ताद मवदूदू कहते हैं, अल्लाह के नज़दीक आपका नाम मुनाफिक के बजाय मुमिन, बाकी के बजाय मुसलमान और बेवफा के बजाय वफादार लिखा जाता है। İşte bizim bütün gayemiz tıpkı Üstad Mevdudi'nin ifade ettiği gibi sadece ilahi iradeye boyun eğmektir. तो हमारा पूरा मकसद रज़ा इलाही के आतात करनी है, जैसे कि उस्ताद मवदूदी ने फरमाया। Sadece Allah'a kul, gayrısından hür olmaktır. हमारा मकसद सिर्फ अल्लाह का बंदा होने है। Kıymetli kardeşlerim, her millet liderinin zihin ufku kadardır. Nasıl ki Mevdudi Pakistan'dan bir uyanış hareketi başlattı ve bu başlangıç Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İnançlı insanları yeniden mücadelesinin içerisine kattı. हर गुम का हुदूद उनके रहनुमा तक है। जैसे उस्ताद मवदूदी पाकिस्तान से एक जागने की तहरीक शुरू की और ये शुरुआत ने तुर्की को उठाया, ईमानदार इंसानों में फिर से जद्दोजहद का जज्बा बढ़ाया। Aynı şekilde bugün Türkiye'mizde Sayın Recep Tayyip Erdoğan biz ümmetin gençlerine yeni zihin ufukları çizmiş, önüne yeni hedefler koymuş, gençlerin sınır ve ülke tanımaksızın lideri olmuştur. इसी तरह आजकल तुर्की में मुअज़्ज़ज़ रजब तय्यब एर्दोआन ने उम्मत के नौजवानों में नया नजरिया दिखाया, हमारे लिए नया हदफ रखा, हुदूद या मुल्कियत के बगैर नौजवानों के रहनुमाई हुई। Kardeşlerim, ümit var olunuz, metin olunuz, diri durunuz, her şeyden öte hazır olunuz. मेरे भाइयों, फिर उम्मीद रहो, साबित कदम रहो, जिंदा रहो, सबसे बढ़कर तैयार रहो। Gelecek yüzyıl biz müminlerin, biz Muhammedilerin yüzyılı olacaktır. अगली सदी हम मुमिनों की, हम मुहम्मदियों की होगी। Gelecek yüzyıl gönüllerinde İkbal'in muhabbeti, aklında Mevdudi'nin azmi ve gayreti, zihninde Erbakan'ın feraseti ve bizatihi kendisinde Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti ve kudreti olanların yüzyılı olacaktır. अगली शादी उन लोगों की शादी होगी जिनके दिलों में इकबाल की मोहब्बत है, इनको जहनों में उस्ताद मवदूदी के अज़्म और कोशिश है, उनके जहनों में अरबाखान की दौरंदिश है और रजब तय्यब एर्दोआन की ज़हानत और ताकत है। Gelecek yüzyıl Filistin'in, Keşmir'in, Malezya'nın yüzyılı olacaktır. अगली शादी फिलिस्तीन, कश्मीर या मलेशिया की शादी होगी। Gelecek yüzyıl Balkanların, Kafkasların, Kudüs'ün, Mekke'nin, Medine'nin yüzyılı olacaktır. अगली शादी बल्कन, कफकास, मक्का और मदीना और कुद्स की शादी होगी। Gelecek yüzyıl Pakistan yüzyılı olacaktır. अगली शादी पाकिस्तान की शादी होगी। Çünkü gelecek yüzyıl Türkiye yüzyılı olacaktır. अगली शादी तुर्की की शादी होगी। Bu duygu ve düşünceler ile hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. इन एहसासात और ख्यालात के साथ मैं आप सबको इज्जत, मोहब्बत और प्यार से सलाम करता हूँ। Pakistan ka matlab kiya? Pakistan, Pak Türkiye, Pak Türkiye dosti. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Fi emanillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.